Hi guys, Gyan Portal again back with our CP challenge of 800 division, and today's question is how does Daytona cost? Basically this is a A series question of 800 division. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. We define an integer to be the most common of a subsegment if its number occurrence on that subsegment is larger than a number of occurrence of any other integer in that subsegment. A subsegment of an array is a consecutive segment of element in the array. Given an array A, if the size n and the integer k, determine if there exists non-empty subsegment of A where k is the most common element. So basically हमें find out करना है क्या k जो है वो most common element है. तो यार ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगर देखा जाए अब तक का कि यार कुछ नहीं है. हमें बस क्या दिया गया है, हमें टेस्ट केसेस दिए गए हैं. टेस्ट केसेस में एन हमें साइज दिया गया है एरे का, हमें एक के एलिमेंट दिया गया है और हमें जानना है कि क्या वो के एलिमेंट मोस्ट सब सेगमेंट एलिमेंट है. कि अगर वो मोस्ट सब सेगमेंट एलिमेंट है तो हमें यस करना है, नहीं तो हमें नो करना है. दैट सिंपल क्वेश्चन गाइस. कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इसको जो है कोड इन करते हैं. तो गाइस जल्दी से मैं कोड पे आ गया हूँ. तो हमने अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है. और यार आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं C++ में, आप मुझे बताइए ज़रूर कमेंट्स में. std and main and this, then we take our t test cases c and t and while. ये while की स्पेलिंग तो ज़्यादा ही गलत हो गई है. and then t, there is our n and there is our k. Now just take n and just take k, and what we just do, we just do an array of n. Now guys frequently we just write our array scn arr minus I. Now if array of I is equals to k, then what we can say, we can say कि found is equals to true. Make a bool variable of found is equals to false. Now if found is equals to true, then cout yes, else cout no. तो गाइस सिंपल लीनियर सर्च का क्वेश्चन था ये हमारा, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें. जस्ट हमें सिंपल लीनियर सर्च लगाई मैंने, एंड जस्ट वी सेव इट एज अ डे CP800, and we just simply run the code guys and use the test cases. Okay guys, now 3 4 5 7 8 and that is yes. ओके गाइज, तो जल्दी से सबमिट करिए कोड फोर्स में और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है. इसी के साथ फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ. जब तक बने रहिए. शब्बा खैर, बाय बाय.